Good morning, class. Today we will start a new chapter. The name of the chapter is Books of Original Entry, Cashbook. This is the second kind of books of original entry. We already discussed journal and the GST topic in the previous videos. So today I'll start with the next topic. It is known as the cashbook. Now, firstly, the meaning of cashbook. From the name, it is clear cashbook. So this book is basically related to the cash transactions only. Means in the cash book we will record all the transactions which are related to cash only. Means if there is any transaction related to credit, that will not be recorded in cash book. So we have to record only the transactions related to cash in cash book. This book is a helping book of journal, or we can say after the preparation of journal we will prepare this cash book. This is a helping book of journal, or this is a special purpose book which we are preparing for knowing the exact amount of cash receipts or cash payment made by a businessman during the year. So this book is also known as this is the helping or subsidiary book of journal. So they are the subsidiary books or the helping books of journal. There are different kinds of subsidiary books, but in this chapter we discussed only one kind of cash book. It is cash book, and other than this cash book we have different books like purchase, sales, returns book that we will discuss in the next chapters. So in this chapter we need to discuss only about the cash book. As I told you, the cash book is prepared to know the cash receipts and the cash payments in a business, and only the transactions related to cash is to be recorded in it. The credit transactions are not recorded in this cash book. This is a practical chapter, so theoretical section is not important here. We will do only the practical questions of this chapter. So before starting with the practical section, we will learn about the difference between cash account and the cash book. Cash account and cash book. Cash account is prepared in the ledgers, and the cash book is maintained to record the cash transaction. This cash account is prepared in the ledgers after the preparations of journal, and the cash book is also known as the original entry book. So side by side when we are doing the journal entries, we will prepare the cash book. So when the transactions of cash are recorded in journal, जब हम journal में सारी transactions को, आपने पीछे जर्नल एंट्रीज की, उसमें हमने कैश की सभी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड किया, उस सिचुएशन में हम कैश अकाउंट बनाते हैं. एंड व्हेन द ट्रांजेक्शन्स ऑफ कैश आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक, देयर इज़ नो नेसेसिटी टू ओपन ए कैश अकाउंट इन द लेजर. अगर आप कैश बुक प्रिपेयर कर रहे हो तो कैश अकाउंट बनाना आपके लिए कंपलसरी नहीं होता. In the cash account, it records one aspect of transaction. It is only cash, and in the cash book, both the aspects of a transactions, means the debit or credit, both the aspects of a transaction are to be recorded. So basically we are preparing the cash book in this chapter. So the next topic which you need to discuss, that is the types of cash book. This is the important topic. As I said, leave the theoretical section because this is a practical chapter, and from this chapter only the practical question will be there in your examinations. So firstly, the types of cash book. There are different kinds of cash book. First we have single column cash book. From the name, single column, there is only one column in this cash book. Then we have double column cash book. Double is कि there are two columns in the cash book. अब डबल कॉलम कैश बुक के 3 सब पार्ट्स होते हैं, जिसमें 2 कॉलम्स होते हैं. फर्स्ट काइंड है कैश और डिस्काउंट का. सेकंड काइंड ऑफ डबल कॉलम में एक कॉलम होता है बैंक का, दूसरा होता है डिस्काउंट का. थर्ड काइंड ऑफ डबल कॉलम में एक कॉलम होता है कैश का और एक होता है बैंक का. सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ डबल कॉलम कैश बुक. देन वी हैव द थर्ड काइंड ऑफ ट्रिपल कॉलम कैश बुक. इन दैट वी हैव 3 कॉलम्स इन द कैश बुक, एंड द लास्ट वन इज पेटी कैश बुक. ये जब आएगी तब मैं इसका मीनिंग आपको एक्सप्लेन करूँगी. So I'll start with the format of this single column cash book. Firstly, we will prepare the single column cash book. So look at the format. I'm preparing the format. This is cash book. I am preparing the format of single column cash book. The first column is date. Then we have particulars. LFs. Before that we have voucher number. Voucher number is the number. जैसे आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आपको एक रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट के ऊपर एक नंबर डिनोटेड होता है. इट मे बी एनीथिंग, तो उस नंबर को वाउचर नंबर बोला जाता है. मींस उस रिसिप्ट का एक नंबर होता है, दैट इज़ नोन एज द वाउचर नंबर. देन वी हैव कॉलम लेजर फोलियो, जो हमने जर्नल में भी किया था. द नेक्स्ट कॉलम इज फॉर द अमाउंट.
Same thing we have in the opposite side. Same columns we have in the opposite side also. Date, particulars, voucher number, LF, and the last is amount. There are two sides. This is the debit side and this will be the credit side. So mainly we have two columns, we have two sides. One is the debit and this one is the credit side. Different columns are there in both sides: date, particulars, voucher number, ledger folio and amount, and same columns we have in the credit side. It is very simple. आप लोगों को याद होगा हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ रूल्स किए थे डेबिट और क्रेडिट में पोस्ट करने के. हमने 3 काइंड्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस किए थे. वन इज़ पर्सनल, सेकेंड इज़ रियल, थर्ड इज़ नॉमिनल. सो दिस कैश बुक इज़ बेस्ड ऑन रियल अकाउंट. यू नो द रूल ऑफ रियल अकाउंट: debit what comes in and credit what goes out. It is very simple. Again I am saying this chapter is not difficult. If the concepts related to journal are clear to you, then there is no problem in this chapter. So as I said कि this cash book is based on the real account, debit what comes in, credit what goes out. अब आपको सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि पैसा अगर आएगा तो डेबिट में और अगर जाएगा तो क्रेडिट में. सो पैसा आएगा तो डेबिट में और अगर जाएगा तो क्रेडिट में. बस आपको सिर्फ ये 2 पॉइंट्स कंसीडर करने हैं. इफ़ द कैश कम्स इट विल बी रिकॉर्डेड इन द डेबिट साइड एंड इफ़ कैश गोज आउट इट विल बी इन द क्रेडिट साइड. अब पैसा आएगा कहाँ से? ऑब्वियसली आप कोई सेल्स करोगे, कहीं से आपको कोई इनकम होगी, देन यू विल रिसीव द मनी. एंड पैसा जाएगा कैसे? इफ़ यू आर मेकिंग एनी पेमेंट रिलेटेड टू एनी परचेज, you are paying any kind of expenses, so for that your money goes out, so it will be recorded in the credit side. And as I am saying in the beginning ki cash book records only the cash transaction. If there is any transaction related to credit, it will not be recorded in the cash book. So I am starting with the first illustration. So this is about the first illustration, so watch it carefully. I am preparing the cash book like this. So firstly prepare your draw the format. This is the debit side and this will be the credit side. Firstly we have date, particulars, voucher number, LF, amount. You may write rupees for the amount. Again we have same column: date, particulars, voucher number, LF, the amount. Leave this in this voucher number and LF column, no need to write anything, so you will write only the transaction in such columns: date, particulars and the amount. So I'll start with the first transaction. So look at in your book. In the first illustration, the first is as on 2020 1st of March. The first is as on 1st of March. Commence business with cash rupee 20,000. When you start your business, so obviously आपके पास cash आएगा. As I said, पैसा आएगा तो डेबिट में, जाएगा तो क्रेडिट में. So as on 1st of March. One more thing. जब भी आप डेबिट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स लिखेंगे उसके साथ आप वर्ड यूज़ करेंगे टू. एंड इफ़ यू आर रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन इन द क्रेडिट तो उसके लिए आप लिखेंगे वर्ड बाय. सो इन द डेबिट वी विल राइट टू, इन द क्रेडिट बाय. सो हेयर कमेंस बिजनेस विद कैश. नाउ व्हेन यू स्टार्ट योर बिजनेस विद कैश, दैट अमाउंट इज़ नोन एज द कैपिटल. आपने ये किया था अकाउंटिंग इक्वेशन में. सो यहाँ पर एक रूल और, जब भी आप किसी भी बुक को बनाते हैं उसमें उसका नाम कभी भी नहीं आता. मीन्स इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग कैश बुक तो पूरी कैश बुक के अंदर कहीं भी कैश वर्ड नहीं आएगा. यू हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द अपोजिट ट्रांजेक्शन कि हेयर वी स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो मेरे पास पैसा किस सेंस में आया? कैपिटल की सेंस में. सो राइट हेयर टू कैपिटल अकाउंट इन द अमाउंट कॉलम एज रुपी 20,000. Second, bought goods for cash. If you purchase goods, so your cash goes out. अब पैसा जाएगा तो as I said it will be recorded in the credit side. Date is 2nd of March. अब आपने bought की हैं, purchase की हैं, so पैसा किस सेंस में गया? By purchase account. क्योंकि आपने goods purchase की इसलिए आपका 5,000 का कैश गया.
नेक्स्ट वी हैव सोल्ड गुड्स फॉर कैश. नाउ यू सोल्ड गुड्स, तो कैश आपके पास आएगा तो इन द डेबिट साइड. कैसे आया? 2 सेल्स की आपने 4,000 रुपीज़ की, तब आपके पास कैश आया. नेक्स्ट वी हैव गुड्स परचेज फ्रॉम रवि ऑन क्रेडिट बेसिस. अब दिस इज ऑन क्रेडिट बेसिस ट्रांजेक्शन. एज आई सेड, कैश बुक में सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स आती हैं, क्रेडिट की नहीं आती, तो लीव इट. नेक्स्ट इज पेड टू रवि. आपने रवि को कैश पे किया 7,000 रुपीज़, तो आप पे करोगे तो आपका पैसा जाएगा. किसको पे किया? बाय रवि. हाउ मच अमाउंट? इट इज़ ₹7,000. नेक्स्ट वी हैव कैश सेल्स. नाउ यू सोल्ड गुड्स. अगेन आपके पास पैसा आएगा एज ऑन 15th of March. कैसे आया पैसा? हमने सेल्स की. सो टू सेल्स अकाउंट एज ₹8,000. नेक्स्ट वी हैव परचेज फर्नीचर फॉर कैश. अब आपने फर्नीचर परचेज किया तो आपके पास से पैसा जाएगा बिकॉज यू परचेज फर्नीचर. तो जाएगा तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट. किस लिए गया? बिकॉज यू परचेज्ड फर्नीचर. सो बाय फर्नीचर अकाउंट यू परचेज फर्नीचर ऑफ ₹6,000. नेक्स्ट वी हैव पेड वेजेस. अब वेजेस पे की, अगेन आपका पैसा जाएगा ₹300. सो अगेन इट विल बी रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड. व्हाट यू पेड? बाय wages account. How much amount? 380. Then you paid rent as on 24th. Again your money goes out. So you will write here by rent account because your money goes out just by paying rent as ₹400. Then you received commission. Commission is my income. We received. तो पैसा आएगा as on 26th. 2 commission से आपको income हुई as ₹600. Next is withdraw for personal expenses. They are my drawings. In the last is paid salary. Both are my expenses. So as on 28th of March, firstly for the drawings, by drawings account, you paid ₹1,000. And as on 31st of March, you are paying salary. So by salary account, again आपका पैसा गया ₹900. So that's all about all the transaction. In the last part, you have to do, जैसे हमने अकाउंट्स को बैलेंस करना सीखा था, सेम एज इट इज़ वी हैव टू बैलेंस द कैश बुक. टोटल दिस साइड इट इज़ 32,600. टोटल दिस साइड ऑल्सो इट इज़ 2680. मीन्स जो मैंने पैसा रिसीव किया, इनकम हुई मुझे 32,600 की और मैंने एक्सपेंसेस पे किए 2,600 के. द साइड इज़ क्रेडिट लेस हेयर. सो एज ऑन द 31st of March, राइट हेयर बाय बैलेंस, carried down. You have to write down the difference of these two columns. The debit or credit का difference 11,920 and close the accounts by double line. So in the last you have to do the balancing. It is not compulsory कि हमेशा रिसिप्ट ज़्यादा होगी, पेमेंट्स कम होंगी. आपकी पेमेंट्स और ज़्यादा हो सकती हैं, रिसिप्ट्स कम भी हो सकती हैं. तो कुछ भी हो सकता है. जिस भी साइड बैलेंस करना है आपको, उस साइड आप बैलेंस कैरी डाउन करके जो डिफरेंस अमाउंट है दैट यू हैव टू राइट डाउन द डिफरेंस अमाउंट. सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट इलस्ट्रेशन. Look at illustration number 3. Write up single column cash book for the month of April. This is the cash book, cash transactions. The first is as on 1st of April, balance from last month. Now, this is the different term here. जो previous question था उसमें mention था कि you started business with cash. So we will write to capital. बट हेयर मेरा बिजनेस प्रीवियस ईयर से चल रहा है और मुझे प्रीवियस मंथ का कैश का बचा हुआ बैलेंस रिकॉर्ड करना है. सो एज ऑन 1st of April फॉर द प्रीवियस मंथ या प्रीवियस ईयर बैलेंस वी विल राइट टू बैलेंस ब्रॉड डाउन. ब्रॉड डाउन मीन्स दिस बैलेंस इज ऑफ प्रीवियस मंथ. द अमाउंट इज 2,50,000. नेक्स्ट इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक. नाउ दिस इज़ अबाउट द कॉन्ट्रा एंट्री. रिमेंबर हमने जर्नल में कॉन्ट्रा एंट्रीज की थी कि व्हेन यू डिपॉजिट सम अमाउंट इन बैंक और विड्रॉ फ्रॉम बैंक, जिसमें हमारे कैश और बैंक दोनों अकाउंट अफेक्ट होते हैं, दैट एंट्री इज नोन एज द कॉन्ट्रा एंट्री. सो हेयर यू डिपॉजिट इनटू बैंक. अब आपने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया है तो हम कैश कॉलम बना रहे हैं कैश बुक का, तो ऑब्वियसली मेरा कैश कम हुआ है. सो एज ऑन 2nd of April जब कैश कम होगा तो हम उसको क्रेडिट में लिखेंगे. You will write here by bank account because we deposit ₹75,000 in the bank. मेरा कैश कम हो गया. Next you purchase goods. If you purchase goods again मेरा बैलेंस कम होगा. So we will write here by purchase account क्योंकि मैंने परचेज की इसलिए मेरा 40,000 कम हो गया.
Next is as on 6, purchase goods from Ramesh. The name of the person is mentioned here. It means this is on credit basis, तो इसको हम इसमें रिकॉर्ड नहीं करेंगे. Next is as on 10th, purchase furniture for cash रुपी 25,000. सो फर्नीचर मैंने परचेज किया, अगेन मेरा कैश कम हुआ. बाय फर्नीचर अकाउंट एज रुपी 25,000. नेक्स्ट ही हैज़ वी हैव लोन गिवन टू चरण दास. हमने कोई चरण दास नाम का पर्सन है, उसको लोन दिया. लोन दिया मीन्स हमने उसको कैश पे किया 20,000 रुपीज़ का. एज ऑन 11th यू हैव टू राइट ऑन द नेम ऑफ दैट पर्सन. बाय चरण दास you paid rupee 20,000 as loan to Charan Das. Next is as on 12th, paid to Ramesh and discount received. This is the cash discount. आपको याद होगा हमने जर्नल एंट्रीज जब की थी तो उसमें एक रूल मैंने आपको बताया था कि इफ़ यूर कैश इन द डेबिट साइड दैन डिस्काउंट इज ऑल्सो इन द डेबिट साइड, और अगर कैश क्रेडिट में है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में होगा. सो हेयर वी पे कैश टू रमेश. तो हमारी जर्नल एंट्री बनेगी रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. बट वी हैव ओनली सिंगल कॉलम कैश बुक. तो जब सिंगल कॉलम कैश बुक है तो सिर्फ और सिर्फ हम कैश वाली ट्रांजेक्शन इसमें हम लिखेंगे. जो डिस्काउंट वाली ट्रांजेक्शन है इसको हम एक नीचे जर्नल का फॉर्मेट बनाएंगे. दिस इज़ नोन एज जर्नल प्रॉपर. जो ट्रांजेक्शन आपकी कैश बुक में नहीं आती उसको हम जर्नल प्रॉपर में लिखते हैं, चाहे वो क्रेडिट की हो या फिर डिस्काउंट से रिलेटेड हो. सो हेयर वी पेड टू रमेश. अब आप रमेश को पे करोगे तो ऑब्वियसली आपका कैश जाएगा. सो राइट हेयर बाय रमेश. यू आर पेइंग कैश टू रमेश ऑफ 28,500. तो 28,500 का मैंने उसको कैश पे किया. नाउ अबाउट दिस डिस्काउंट रिसीव. अब आपने कैश पे किया है तो जर्नल एंट्री होगी रमेश डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट. तो हमें अपनी जर्नल प्रॉपर में उस ट्रांजेक्शन को लिखना है जो हमने कैश बुक में नहीं लिखी. व्हाट इज़ रमेश डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. ओनली द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बिकॉज कैश हम लिख चुके हैं कैश बुक में. नेक्स्ट वी हैव इशूड चेक टू अ क्रेडिटर. किसी भी क्रेडिटर को हमने इशू किया एक चेक तो मेरा पैसा जाएगा. बाय द नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट मेंशन हियर, सो यू विल राइट एज क्रेडिटर्स ओनली. 40,000. सोल्ड गुड्स टू विष्णु फॉर कैश. अब आपने विष्णु को गुड्स बेची तो आपके पास पैसा आएगा. टू सेल्स अकाउंट. दिस इज ऑन कैश बेसिस. 36,000. कैश सेल्स ऑफ रुपी 120 ऑफ विच बैंक्ड ऑन 20th अप्रैल. कैश में मैंने सेल्स की 1,20,000 रुपीज़ की 16th को. तो 16th को आप लिखेंगे टू सेल्स अकाउंट. यू रिसीव्ड रुपी 1,20,000 एज कैश फ्रॉम दैट सेल्स. आउट ऑफ दिस 120 एज ऑन 20th अप्रैल यू डिपॉजिट रुपी 1 लाख इन बैंक. वंस अगेन 16th को मैंने सेल्स की थी 120 की. सो आई राइट हेयर टू सेल्स अकाउंट एज 120 क्योंकि मेरा पैसा आएगा कैश में सेल्स करने से. अब उस 120 में से 1 लाख रुपये आपने 20 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया तो आपके पास से पैसा जाएगा. यू मे राइट हेयर बाय बैंक अकाउंट. यू डिपॉजिट रुपी 1 लाख आउट ऑफ 120 इन द बैंक. नेक्स्ट इज रिसीट फ्रॉम गंगाराम. Here you received money. So to write down the name of that person, Gangaram, 19,600. Next term we have the next one we have discount allowed. Again this discount is not to be recorded here. तो इस डिस्काउंट को हम अपना डिस्काउंट जर्नल प्रॉपर में शो करेंगे. डिस्काउंट अलाउड है बिकॉज यू रिसीव्ड हेयर मनी. तो आपकी जर्नल प्रॉपर में एंट्री होगी डिस्काउंट अलाउड इज़ माई एक्सपेंस. डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू किससे मिला था मुझे? गंगाराम. द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज़ 400 हेयर. नेक्स्ट टर्म वी हैव विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक. अब आपने बैंक से कैश विड्रॉ किया, बैंक से पैसा निकालोगे तो आपके बिजनेस में कैश आएगा. सो एज ऑन 24th यू रिसीव्ड to bank account cash of rupee 25,000. Next we have purchased stamps, paid salary and paid for furniture repair. All the three are my expenses.
सो फर्स्ट था 25th को, इनमें पैसा जाएगा. यू परचेज स्टैम्प्स ऑफ ₹1000. देन एज ऑन 28 यू पेड सैलरी. So by salary ₹12,000, and as on 29th we pay for repairs ₹1,500. One more thing we have, एक हमारी previous transaction थी as on 14th issued check to a creditor. इसको मैंने कैश बुक में लिख दिया, बट इट वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक बिकॉज यहाँ पर वर्ड था चेक. ये मैंने लेफ्ट कर दिया कि इट इज़ मैंशन कि दिस इज़ वी इशू अ चेक, वी आर नॉट पेइंग कैश. तो चेक तो आपका ऑलवेज बैंक से विड्रॉ होता है, कैश में पेमेंट होती है. अगर यहाँ पर होता है पेड टू अ क्रेडिटर, तो हम यहाँ पर लिखते हैं बाय क्रेडिटर बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग द कैश कॉलम नॉट द बैंक कॉलम. तो अगर आपने चेक इशू किया है दैट विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, क्योंकि चेक आपका ऑलवेज बैंक से विड्रॉ होता है. So that's all about this illustration. In the last you have to do the balancing. Total the debit side, it is 4,50,600, and as the credit side is less here, so you have to do the balancing right here by balance, carry down as the last day of the month, as on 30th of April. The balancing figure is 1,47,600. This is the difference between the debit and the credit. You have to total the credit side also. जो दोनों का difference है, this is the balancing figure, the difference of debit and credit side. So this is about the single column cash book. Now you have to solve questions related to this single column cash book up to illustration number or as well as exercise 3. The next term related to this cash book we will discuss in the next video. Up to that, sort out the question, and if any doubt, please without any hesitation talk to me during the given time mentioned for the queries, and sort out your queries very easily by contacting me as per the time schedule mentioned in your timetable. So up to that, take care and goodbye.